Jai Jinendran, hello everyone. I am riyapatni and I welcome you all to my YouTube channel, Shukar and Sabar. If you want to be happier in life, change is necessary. तो इससे ये तो clear है कि the key to getting the life that you want is change. तो भाई, the key to change is, whether you like it or not, are focus and determination. If you stay focused and determined towards what you have set out for yourself, the change will follow. So इसीलिए focus and determination equals change, because with focus and determination you can change it all. क्योंकि आज का वीडियो है about power of determination, तो चलिए देखते हैं what exactly is determination. अब गूगल की लैंग्वेज में बताऊं तो determination is the quality of having firmly decided to do something even if it is very difficult. Matlab, having the clarity in your mind that I have decided to do this thing and focusing on that particular thing only, focusing on how you will achieve it no matter what the situation is, never giving up on it. ये हो गई गूगल की भाषा, है ना? तो चलो अब हम देखते हैं एक स्टोरी जो हमें बताएगी एग्जैक्टली कि डिटर्मिनेशन होता क्या है और वो क्या कमाल की चीज है. तो चलिए देखते हैं स्टोरी which will relate you to the power of determination. I'm sorry, but I'll just be reading out the story because my main focus will be towards the conclusion of it. So I recently read it and I find it to be more suitable for this particular topic. So I'm taking it over here. होता क्या है ना, अमेरिका में एक स्कूल है जिसमें ओल्ड स्कूल तरीके से कोल का जो होता है ना स्टोव, उसको जलाकर वो रूम को गर्म रखा जाता है ठंडी के दिनों में. तो एक छोटे बच्चे को ये काम असाइन किया हुआ था कि he'll be coming to school early to start the fire and warm the room before his teachers and classmates arrive. So one morning, the students and teachers arrived to find the school engulfed in flames. आग से भरा हुआ था पूरा स्कूल. They dragged the little boy, जिसका काम था वो फायर लगाना, out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to a nearby country hospital. From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best, really, because that terrible fire had devastated the lower half of his body. But the brave boy did not want to die. He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of the body, it would almost be better if he had died. मतलब वो मर गया होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब वो जिंदगी भर एक अपाहिज बन के रहेगा, lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. Once more the brave boy made up his mind. He would not be a cripple. He would walk. But unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Ultimately, he was released from the hospital. Every day, his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, no emotion. Nothing. Yet, his determination to walk was as strong as ever. When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself out of the wheelchair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stake by stake, he began dragging himself along the fence, convinced that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those lifeless legs. Ultimately, through his daily massages, his iron persistence, and his resolute determination,
He did develop the ability to stand up, then to walk slowly, then to walk completely by himself, and then to run. He began to walk to school and then run to school, to run for the sheer joy of running. Later, in college, he made the track team. Still later, in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. Now he is presented to be an American athlete having a world record on his name. So I guess I don't have anything else left to say because the story says it all. बस इतना याद रखना कि it is difficult to find anyone in the world who has made a place for themselves without constant struggle to reach their goal. इसीलिए खुद पे भरोसा रखो और बस चलते जाओ, करते जाओ जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें तुम्हारे गोल के पास और ज्यादा लेकर जाए. Always remember, it takes determination to see a dream come to pass. The question is not will you start, but will you finish. ये मैंने इसीलिए अभी कोट किया क्योंकि सीए की जर्नी में ना बहुत लोग तूफानी मचाने के इसमें आ तो जाते हैं, फाउंडेशन भी सही से कर लेंगे, असली मजा आएगा इंटरमीडिएट में और शायद इससे ज्यादा फाइनल में. मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इंटर में बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, बहुत बार गिव अप करने का मन करेगा, बहुत बार चिढ़ मचेगी. तब सिर्फ और सिर्फ एक रीजन याद करना कि इस फील्ड में हम आए क्यों थे, क्योंकि आपके इस फील्ड में आने के पीछे, इतनी मेहनत लगाने के पीछे का अगर क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मैदान में टिक पाना थोड़ा मुश्किल है. नामुमकिन नहीं कहूंगी, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन. तो अगर किसी और वजह से आए थे, पेरेंट्स ने फोर्स किया इसीलिए सीए कोर्स में आए हो, लेकिन अब भी अगर अपने जिंदगी का मकसद बना लो ना, फिलहाल इसे शॉर्ट टर्म मकसद, क्योंकि जिंदगी सीए तक लिमिटेड नहीं है, ये इसके आगे भी बहुत चलेगी और डिटर्मिनेशन हर कदम पर आपके काम आएगा. आज सीए का पड़ाव है, कभी और कुछ होगा, ये तो हमेशा जिंदगी में लगा रहेगा. लेकिन अगर आज डिटर्मिनेशन के साथ ये चीज को कंटिन्यू करते हो, तो ट्रस्ट मी और नॉट, अब शायद उसे भी पीछे छोड़ दो जिसका क्यों स्ट्रॉन्ग था. रिमेंबर, योर माइंड इज वेरी पावरफुल. फॉर ऑल दोज जिन्हें अटेम्प्ट्स लगे हैं, गाइज यू आर मोटिवेशन टू मेनी, क्योंकि आप लोग डिटर्मिनेशन की मिसाल हो. समझ रहे हो, कभी खुद को किसी से कम समझने की गलती मत करना. जब तक आप मैदान में डटे रहने के लिए तैयार हो ना, आप स्ट्रांग हो, आप किसी से कम नहीं हो. और अगर कभी ऐसा लगे कि सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि भगवान उसी की टेस्टिंग लेता है जिसमें वो टेस्ट को पास करने की क्षमता होती है. So you are capable of everything in the world, and who knows, you might become the world's greatest of entrepreneurs one day. Have faith in yourself because it is very important. छोटी मोटी हार जीत चलती रहेगी, लेकिन do not ever give up on what you really want in life. The road to success is not straight. There will always be a curve called failure. आज नहीं है, कल होगा, जिंदगी में कभी ना कभी होगा, बट ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा. ठीक है, तो the road to success is not straight. There is a curve called failure, a loop called confusion, speed bumps called friends, red lights called enemies, caution lights called family. You will have flat tires called jobs, but if you have a spare tire called determination, engine called perseverance, and a driver called willpower, you will make it to a place called success. तो जब मंजिल इतनी सुहानी है, तो सफर को एंजॉय करते चलो. कोई भी चीज को अगर आप ठान लो ना, तो अगर आप में वो करने की क्षमता ना भी हो, तो भी आप उसको 80 to 90% कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से. ठीक है, तो इसीलिए कभी भी लाइफ में डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, इन सब चीजों को हल्के में मत लेना. बस इतना ही कहूंगी कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन. इस वीडियो में यहीं तक. आई होप यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन. मैं कोई पॉइंटर्स नहीं देना चाहती थी. आई एम अ बिलीवर
कि जब तक आँखों देखी नहीं होती, जब तक आप कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं सुनोगे या देखोगे ना, आपको उसकी चीज़ के पावर पर यकीन नहीं होगा शायद। अ, कोरोना में भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो मामूली इन्फेक्शन की वजह से भी जिनकी डेथ हो गई, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, और ऐसे भी बहुत लोग थे जो डटे रहे, जो नहीं चाहते थे अपनी लाइफ पे गिव अप करना, वो आज भी ज़िंदा है, नो मैटर हाउ हार्ड दे स्ट्रगल्ड। और सीए जैसे कोर्स में ना अगर किसी से सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती हो सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य से रखना, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये बात को ध्यान रखना। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।